Okay, then. So we had already understood the as what is sound and why do we call sound as a form of energy. Then we had also gone through the production of sound, that how sound used to produce through human beings, how the voice box used to act the house of the sound in our body. So the vocal cord is helping us to produce the sound. So these things we had gone through. Then we had also gone through the production of sound through different kinds of musical instruments. So there are various kinds of musical instruments, and they can be classified basically in three basic forms. That is the string instruments, wind and brass instruments, and the percussion instruments. So we had understood that how the vibration goes on over there, and with that vibration, we can hear the sound. So these things we had already understood. Now we are going to understand about the propagation of sound, how the sound used to travel, and what other things are there that also we have to discuss in this. So when we are discussing about the sound, or when we are talking about the sound, then we need to understand that there is a property which used to be called to be as the propagation of sound. So propagation of sound explains us or tells us that the production the sound used to travel from one end to another end by causing compression and rarefaction. Okay, and this used to occur in matter. So 1 minute, I will show you an animation, and with that animation I will explain that how this compression and rarefaction used to occur, and how that goes on for the condition of the um, transmission of sound from one end to another end. So these things we have to understand. So just a minute, I will share an animation. 1 minute, please. Okay, so I hope that you all can see this image over here. You will see that how the particles are moving. Now, see students, when we discuss about the propagation of sound, then we have to understand this, that sound requires a material medium to travel. यानी साउंड को एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, और मटेरियल मीडियम का मतलब मैटर हो गया। तो जब हम लोग किसी मैटर के बारे में बात करते हैं, किसी मैटर के थ्रू साउंड को ट्रैवल करने की बात करते हैं, तो वहां पर मैटर में पार्टिकल्स कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के थ्रू ये हो पाती है। सो प्लीज नोटिस द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स के मोशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर मूव हो रही हैं, दे आर वंस कमिंग क्लोजर एंड देन वंस दे आर गोइंग फार अवे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एक बार पार्टिकल्स यहाँ पर एक एंड से देखने की कोशिश करो, एक एंड से देखने की कोशिश करो। सो इस एंड में एनर्जी सप्लाई हो रही है, यहाँ पर इस एंड में एनर्जी सप्लाई हो रही थी। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट रिप्ले अगेन। Okay, so over here you can see that the energy been given to one end. यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर एक एंड में एनर्जी दी जा रही है, और फिर ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफर हो रही है पहले फर्स्ट पार्टिकल्स में, उससे कैरी ऑन हो रही है सेकंड पार्टिकल, उससे कैरी ऑन हो रही है थर्ड पार्टिकल। और जब ऐसा हो रहा है तो तुम लोग देख रहे होगे कि पार्टिकल्स एक बार नजदीक आ जाते हैं। तो जब वो नजदीक आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, यानी वो पार्टिकल्स नियर क्लोजर टू ईच अदर आ गई हैं। और फिर जब वो पार्टिकल्स दूर हो जाती हैं, जब वो पार्टिकल्स सेपरेट हो जाती है एनर्जी रिलीज कर देने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं रेयरर फ्रैक्शन। So compression and rarefaction are the two basic components because of which the sound is going to travel from one end to another end. So that it shows in this particular formation. And when we are talking about the longitudinal wave, when we are talking about the longitudinal wave, that is the wave by which the sound used to transmit. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ही उस तरह का वेव होता है जिससे साउंड एक कॉर्नर से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसमिट होती है। एंड वी यूज्ड टू क्रिएट अ वेव फॉर दैट। हम लोग इसी को शो करने के लिए
एक वेव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. So this is the mean line, and on this one we used to construct or we used to draw the graphical form. तो ये इस तरह से एक ग्राफ बनाई जाती है. तो ये जो ग्राफ तैयार हो रही है, what does this shows? This shows that this upper one, this is known as the crust, and this lower one is known as the trough. और ये अपर वन और लोअर वन जो एंड है, ये दिखा रहा है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखा रहा है विद द एनर्जी लूप. एनर्जी के साथ उसकी मूवमेंट को दिखाई जा रही है. हम इसको ब्लैंक पेपर में बनाते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन मच डिटेल्ड फॉर्म. 1 minute please. Okay, so over here, so if we will go for this graphical formation, then this is the baseline on which we used to draw the graph. Over here we used to draw the graph like this. So we are making the graph like this, then coming down and up and then down like this. It used to go on. Now this upper formation, ये जो upper formation है, ये दिखाता है energy receive होना. When the particles receives the energy, then they get energetic. वो energetic हो जाते हैं और वो compression create करते हैं. They reaches to the another particle, वो दूसरे particle तक पहुंचे और वो उसने अपना energy उसमें supply कर दिया. So when it gives out the energy, it loses its own energy. वो अपना energy loss कर देता है और सामने वाले को energy दे देता है. So this shows that it is reaching to its own position once again. ये वाला जो lower end है, वो दिखा रहा है कि वो अपने पुराने पोजीशन में फिर से आ गया. तो ये एक पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है. और फिर जब दूसरा पार्टिकल एनर्जी को गेन किया, वो एनर्जी गेन करके वो हाइपर हो गया, वो ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर वो तीसरे पार्टिकल के पास पहुंचा और वहां पर जाकर वो अपने एनर्जी को जैसे ही दे देता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देती है. तो ये फेनोमेना कंटिन्यूअसली चलता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दौरान, और इसी के कारण एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं साउंड एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी ऑन होती है या एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होती है. तो साउंड के ट्रांसफर होने के लिए ये वेव फॉर्मेशन है, और ये वेव फॉर्मेशन दिखा रहा है द कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, एंड that is actually the movement of the energy among the particles. तो ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस एनिमेशन के थ्रू, जो तुम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे तुम लोगों को पता चल रहा है कि पार्टिकल्स की मोशन किस तरह से हो रही है. तो वो एक बार कंप्रेशन कर रहे हैं, एक बार वो रेयर फ्रैक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी हो सकती है. सो दिस इज द थिंग व्हिच वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. So once again, what is propagation of sound? According to the propagation of sound, we can say that sound used to travel from one end to another end, or one place to another place, or sound used to travel at any particular place with the help of a material medium. And in the material medium, we used to observe compression and rarer fraction, because of which the energy can be transmitted from one end to another end. So over here also in this diagram, you can see that how the particles are coming closer once. So when they are coming closer, they used to cause a compression. When they go far away from each other, then they used to cause the rarer fraction. Again, when they come closer to each other, they causes compression, and again when they are moving away from each other, they are causing the rarer fraction. So this continuous process used to go on and on, because of which only we can observe that sound can travel from one end to another end, or from one place to another place, and the representation of this compression and rarer fraction can be used by this kind of graph. So when we are going through this graph, some of the important terms which you should know for this graph, that is that the upper column, this upper column is called to be as crust. This lower column used to be called to be as trough. Okay, this crust and this is trough. The next thing is that one complete loop can be taken from, say, as from one point here to here. This can be considered to be as one complete loop or one complete oscillation. This complete loop or oscillation which is there, it is showing the complete pathway
of the energy that it used to travel in a particular particle. So जब किसी एक पार्टिकल में एनर्जी मिला, फिर वो एनर्जेटिक होकर आगे की तरफ गया और वो एनर्जी लॉस करके अपने पुराने पोजीशन में आ गया, इस पूरी चीज को दिखाने के लिए एक लूप होती है, या फिर इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हैं एक ऑक्सीलेशन, पार्टिकल का एक ऑक्सीलेशन भी कहा जा सकता है। Now, this one oscillation used to be represented by the wavelength. ये यहाँ पर wavelength से शो की जाती है. So either we can take it from end to end. हम लोग यहाँ पर end से end तक ले सकते हैं, या फिर हम लोग किसी कर्व के मिड पॉइंट से दूसरे कर्व के मिड पॉइंट तक के बीच के लेंथ को भी ले सकते हैं. So that is denoted with lambda. Lambda is a symbol which we use to represent the wavelength. Okay, so जब भी वेव बनती है, वेव की जो लेंथ होती है, उस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा का यूज किया जाता है. Now with this one more thing which you need to remember, that the total number of complete oscillations done by the particle in 1 second is called to be as the frequency. Okay, so इस पार्टिकल के थ्रू या फिर जब भी साउंड ट्रैवल करती है, वाइब्रेशन होता है, तो जब ऑक्सीलेशन वहां पे हो रही है पार्टिकल्स की, द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन दैट इट मेक्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना टोटल कंप्लीट ऑक्सीलेशन वहां पे होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है. सो फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन 1 सेकेंड. And with that one, we come for the time period. Okay, so these things are very, very important. So when we are going through the wave, then we need to remember the frequency. What is frequency? What is time period? So time period is the time taken by the wave to form its one curve. यानी वो टाइम जो कि साउंड के वेव के द्वारा लगती है एक पूरे कर्व को बनाने में, एक पूरे कर्व को होने में जो समय लगता है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड. यू विल गो फॉर अ फॉर्मूला वेयर इट इज सेज दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 by टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 by frequency. So this is a set of formula which you will come across when you will study some more things regarding this in your next class. Okay, this is not in your this class. You will study about this thing in your next class in more detail. But you should remember this thing from now only. It will help you in your next class. So frequency is equals to 1 by time period and time period is equals to 1 by frequency. So once again, what is frequency? Frequency is the total number of complete oscillations that have been made by the sound wave in 1 second, and time period is the time taken by the wave to complete its one oscillation. So that is the thing which we need to remember. Now, let's understand about the different characters of sound that we should go for. यानी जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको क्लासिफाई करने के लिए या उसको सेपरेट आउट करने के लिए कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स होते हैं बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश देम, बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई देम इन डिफरेंट वेज. सो वन इज द लाउडनेस, another is the pitch or shrillness of the sound, and the next is the quality or the timbre of the sound. So these are the basic properties or the basic conditions in which we can classify the sound in different forms. So first we will start with the loudness. Loudness किसको कहते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. So loudness, it is the property by virtue of which a louder sound can be distinguished from a faint one. So when you are hearing any kind of sound, when you can hear any sound, then you can distinguish that whether it is a very loud sound or it is a faint sound. यानी कोई sound बहुत ज़्यादा noisy होती है, बहुत ज़्यादा loud होती है, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो काफी धीमी होती है, काफी हल्की होती है. तो उस तरह के साउंड को अगर हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एज द कैरेक्टर ऑफ द साउंड एज लाउडनेस. तो उसको हम लोग लाउडनेस के रूप में समझते हैं. एंड दिस लाउडनेस यूज्ड टू डिपेंड ऑन द पिच ऑफ द साउंड. ओके, सो not only the pitch of the sound, that depends on the amplitude, that depends on the amplitude of the sound, basically not on the pitch of the sound. With the same pitch and the same quality, we can observe that the loudness can be different. So basically we will see for it as in different forms.
तो अलग अलग जगहों पर साउंड की लाउडनेस जो है वो अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सम अदर फैक्टर्स. सो पिच और क्वालिटी, यानी जो अगर सेम क्वालिटी या सेम बिहेवियर के साउंड को भी अगर हम लोग सुनते हैं तो वहां पर हम लोगों को लाउडनेस में वो डिफर हो सकती है. सो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश द डिफरेंट लाउडनेस ऑफ द साउंड? सो इट इज एक्चुअली बीन कैटेगराइज्ड और इट कैन बी क्लासिफाइड on the basis of the amplitude. Okay, so loudness is directly proportional to the square of the amplitude of the sound. Now what does this amplitude means? So see, when we had done the wave, हम लोगों ने अभी भी कुछ देर पहले वेव को समझा था, तो वहां पर जो वेव हम लोग बनाते हैं, ये जो वेव हम लोग बनाते हैं, यहां पर जो वेव की मीन डिस्टेंस होती है उसके 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 बेस पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड टू बी इट्स एम्पलीट्यूड. Okay, the distance of the curve from the mean point is called to be the amplitude. ये जितनी ज्यादा होगी loudness भी उतनी ज्यादा वहां पर होगी, because we know for this thing that the loudness of the sound is directly proportional to the square of the amplitude of the sound. So if the amplitude is more, then the sound will be considered to be as more loud over there. So that is one of the factor which you need to remember. The next thing is that it is inversely proportional to the square of the distance. So जब loud sound की बात आती है तो उसमें एक दूसरा फैक्टर भी आ जाता है कि it is inversely proportional to the square of the distance. Okay, so loudness is inversely proportional to the square of the distance. Okay, so why we are talking about this thing? So you can understand this one with a simple experiment, that if you are standing near to a very big speaker, then you will hear the sound which is coming from the speaker very loudly. But if you go far away from the speaker, then from the same speaker, if the same intensity of sound is produced with the same at the same time, then the sound will not be heard so louder. Okay, so that is a condition which we need to remember. So these factors will be more useful in your higher classes. Just now you can remember that the amplitude is one of the factor on which the loudness used to depend. The next one is the square of the distance between the source of the sound to the receiver. The next thing is that the surface area of the vibration. So if the surface area is big, if there is a bigger surface area, then the sound would be louder over there. Such as, for example, I hope that you all had seen or observed the big drum in your school. So the drum's skin used to be very big. Okay, and due to its bigger size, what happens? It can produce a louder sound. Okay, due to the big size, it can produce a louder sound. So that is the thing which you need to remember. Now, the next thing which you have to also see, that the density of the material or the medium through which the sound is traveling, on that one also the sound's loudness used to depend on. So these are the things which we used to observe, and the loudness of the sound used to be measured in decibel. This is a unit by which we used to measure the sound, and this normally we used to say that the sound which is less than 80 decibel, that is considered to be as normal sound. Okay, but if the sound is more than 80 decibel, sometimes in some places it can be considered to be as 100 and 120 also, but mostly we take it as 80 decibel. So if it is under 80 decibel, then it is okay, but if it is more than 80 decibel, then it is considered to be as a louder sound. So with that one, people can be restricted in some particular places to avoid those kind of sounds. As well as you need to remember this thing, that the loudness is depending from person to person. लाउडनेस एक ऐसा फेनोमिना है जो लोगों पर डिपेंड करती है. अलग अलग लोगों पर लाउडनेस का जो फेनोमिना है वो अलग अलग तरह से हो सकता है. किसी के लिए कोई साउंड हो सकता है लाउडर नहीं कंसीडर हो, किसी के लिए साउंड जो है वो लाउडर कंसीडर हो भी सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अ जोक ओनली, इफ यू सी दैट द साउंड or the song which you used to love to hear at your home with a very louder voice, you feel enjoy, you like that one.
But at the same time, the elderly person at your home may not like that. They will say that so much of loud sound you are playing, and it is so much irritating, something like that. So that depends from person to person also. So that is also you need to remember. So loudness is the perception by which, or the condition which we can understand, or we can separate out the sound into two basic categories, whether it is considered to be a very loud sound or it is considered to be as a faint sound. Okay, now let's move to the next condition which we need to understand, that is the pitch or the shrillness of the sound. So what is the pitch and the shrillness of the sound? So this one you can understand easily by the voice of your father and your mother. So when you hear the sound of your father, then it is a little bit heavier, and when you hear the voice of your mother, then it is little bit short, little bit of the lower quality, or the we can consider it as a soft sound. Okay, so why this is so? This is because when we used to hear the sound that is of different pitch, okay, or shrillness. So your father's sound is not so shrill, but your mother's sound is shrill sound over there. So why it is so? It is because of the character of the sound wave which is used to be produced. So देखो, हम लोगों ने अभी भी कुछ देर पहले देखा था कि वेव फॉर्मेशन होता है। तो अगर वेव में वेव की फॉर्मेशन इस तरह की हो, अगर बहुत लंबे लंबे इस तरह से अगर वेव्स फॉर्म होते चले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि साउंड इज ऑफ अ वेरी हाई पिच, यानी यहां पर पिच ज्यादा होगी। सो पिच ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पिच ज्यादा होगी, और अगर पिच ज्यादा होगी तो वो श्रिल होगी। श्रिल होने का मतलब होता है पतला होना। साउंड अगर पतला है तो इसका मतलब है कि उसमें पिच हाई है। तो ये जनरल वॉइस से देखा जा सकता है। जो फीमेल होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो या फिर लेडीज हो, उनकी जो साउंड होती है वो हाई पिच होती है। तो हाई पिच होने का मतलब क्या हुआ, उनके फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पर ज्यादा होती है। जबकि अगर हम लोग देखते हैं मेल साउंड, वहां पर वो थोड़ी हेवी होती है। तो हेवी होने का कारण क्या है कि वहां पर फ्रीक्वेंसी कम होती है। सो दिस इज द कंडीशन व्हिच वी यूज टू ऑब्जर्व for the sound which used to produce. So this is one of the character by which we can classify the sound into two different forms. So either you can say that it is of a high pitch, means it is very much thin in production, and one sound can be considered to be as heavy if it is low in pitch. So this is the character of pitch. Okay, and that is mainly depending on the frequency of the sound. If the frequency is more, then the pitch will be high, and if the frequency is less, then the pitch will be also less. Then the next thing which we need to understand, that is the quality or the timbre of the sound. Now, this quality or timbre of the sound is actually a condition or character by which we can distinguish the sound from one person to another person. Now, see, in your day-to-day routine, you used to hear lots of sound from different person, different places. You can hear different sounds, whether it is the horns of different vehicle, whether it is the human voice at your family. In your family there are so many different person, and they all have different voice tone. So that voice tone or that voice pattern is called to be as the quality of sound. So if even you are not looking to that person, and you just had heard the sound of that person, which is very much familiar to you, you can easily identify, yes, that sound belongs to that particular person. So why that is so? That is because that sound has a particular quality. So जब हम लोग साउंड सुनते हैं, किसी के भी अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं, तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग क्वालिटी होती है या अलग टिम्बर होती है, और उस पैटर्न के बेसिस पर हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी साउंड को किसी दूसरे साउंड से, या कंपेयर कर सकते हैं किसी एक साउंड को किसी दूसरे साउंड से। तो यहाँ पर ये जो है, ये सेम लाउडनेस, सेम फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड आई होप दैट यू ऑल हैड एक्सपीरियंस दिस थिंग इन योर डे टू डे लाइफ। तुम सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जहां पर कि साउंड की प्रोडक्शन इस तरह से होती है। So these were the characteristics of sound. Now, under the characteristics of sound, one more thing is that that is the audible and inaudible sound. ये ह्यूमन बीइंग के बेसिस पर हम लोगों ने इसको डिटरमाइन किया हुआ है। तो ये कहाँ से आया है या फिर ये कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं? सो सी स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द हियरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, वी कैन क्लासिफाई द साउंड as in audible and inaudible sound. So some sound can be said to be as audible, and some sound can be said to be as inaudible, depending on the person by which or the sound which has been produced from a particular source. So generally, for a normal human being, the hearing range is from 20 hertz to 20,000 hertz. See, this hertz is the unit of frequency. हम लोगों ने अभी भी फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा था। Frequency is the total number of complete oscillation done by the wave in 1 second. So normal human beings hear for a proper hearing capability. Under that condition, that person can hear the sound which is produced between 20 hertz to 20,000 hertz. तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास नॉर्मल हियरिंग कैपेबिलिटी है, वो साउंड सुन सकता है या उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकता है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर इसके नीचे, अगर 20 हर्ट्ज के नीचे का कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या 20 हर्ट्ज से ऊपर का कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, then that person will not be able to recognize that sound. So this is the hearing capability of a normal person. Okay, and with that one, there are some two terms also which we use to classify. If the sound is less than 20 hertz, then that is said to be as infrasonic sound. Whereas the sound which is produced more than 20,000 hertz, that is called to be as ultrasonic sound. So you need to remember this one. So again, this hearing capability is for only human beings. Only we are considering it for human beings. If we will see for different animals or different organisms, we will observe that they have different hearing capability. So many do have a hearing capability less than 20 hertz, and they have more than 20 hertz. Say as for example, the very common animal which we can see in our neighborhood, that is a dog or a cat. So they both have a very good hearing capability than compared to us. So normally if I will see, then for dogs it is around to be 10 hertz to 1,10,000 or 1,20,000, or sometimes for some specific dogs we can go for 1,80,000 hertz also. So depending on the breed or the quality of the dog or cat, so they can hear a lot of sound or more than our hearing capability. So on the basis of our own hearing capability, we had categorized the sound in this audible and inaudible pattern. And as I said, if you remember this thing, that the sound which is produced less than 20 hertz, that is called to be as infrasonic, and the sound which is produced more than 20 hertz, that is called to be as ultrasonic. Okay. One interesting thing which you should know for this one, that a newly child born or a newborn child which we used to observe, you may have also seen a newborn child, whether it is a boy or girl, it's not matter, they do have more hearing capability than an adult person. ओके किसी एक एडल्ट पर्सन से, जो कि अभी हम लोगों ने देखा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज नॉर्मल हियरिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन अगर एक नए नवजात बच्चे को देखा जाए तो उनकी जो हियरिंग कैपेबिलिटी होती है वो इससे ज्यादा होती है। वो अराउंड 30-35,000 हर्ट्ज तक उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी होती है। और जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो 20,000 हर्ट्ज में आकर रुक जाती है। और इनकी जो ये हियरिंग कैपेबिलिटी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज का, ये नॉर्मल हियरिंग कैपेबिलिटी है व्हेन द ईयर्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। Okay, so these are the things which we have to understand when we go for the characteristics of the sound. So till here, is there any doubt or any problem? So many things I had gone through. Is there any problem or any doubt? Yes, students? Do anyone is having any problem?
I think no. So, No. okay, so till here only I will keep the class for today. And again, we will discuss more things in the next class. So please, you all go and revise till these topics. And whatever the topics are left out, we will discuss it in the next class. Okay. So for now, bye everyone. Thank you.